Hello, dear students. How are you all? I hope all of you are fine, all of you are taking care of yourself, and all of you are studying regularly at your home. Okay, students, your exam is on the way, so you have to study. ठीक है. I know all of you have prepared your timetable for all the subjects. Okay, according to that, you have to study. ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास बहुत कम टाइम जो है वो बचा है अपने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए. सो वी हैव टू गिव 100% एंड यू have to watch the regular videos, every day's regular videos, and you have to complete your assignment on that particular day. Okay, you have to note down the answers on that particular day itself, so that आपके जो है वो एक एक चैप्टर्स अगर आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक एक चैप्टर्स का रिवीजन आपका 2 दिन में हो जाएगा. ठीक है. सो फॉर दैट यू नीड टू वॉच एवरी वीडियो. Okay, because every video gives a lot of information about the chapter, and as you are gaining the knowledge, that knowledge will retain in your memory, and at the time of exam you will remember it. Okay. Yes, so I hope all of you have watched yesterday's video. In that video we have taken some kind of objective types of questions of your chapter number 2, that is periodic classification of elements. Okay. So in today's video we are going to take some kind of subjective types of questions. Okay, which considers about 2 marks question, give reason, then short notes, then brief answers. Okay, so be with your textbook and note down the things and mark it. Okay, so without wasting the time, so let's start with the questions, that is write short notes. ओके, शॉर्ट नोट्स का क्वेश्चन है तो कितने मार्क्स के लिए आएगा, 2 मार्क्स के लिए. सो ईच क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी मार्क्स, 2 मार्क्स. सो नाउ लेट्स टेक सम शॉर्ट नोट्स फ्रॉम दिस चैप्टर. ओके, सो फर्स्ट इज मेंडेलीव्स पीरियोडिक लॉ. मेंडेलीव का पीरियोडिक लॉ. डोंट कंफ्यूज बिटवीन मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ एंड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ. ओके, तो क्या आपको ध्यान में रखना है, 2 मार्क्स है, मतलब हाउ मेनी पॉइंट्स इट कंसिस्ट ऑफ. Yes, it consists of 4 points. Okay, if you remember 3 points also, then only it's okay. But आपको क्या करना है, 4 points you have to remember. Okay, so let's see the answer. Mendeleev organized the periodic table on the basis of atomic masses of the element. Okay, so this line is very very important, that is atomic masses of the elements. Now the second point is, when he arranged the 63 elements known at that time in the increasing order of their atomic masses, then what happened, what he found that the chemical and physical properties of elements shows रिपीटेशन आफ्टर अ सर्टन इंटरवल. ओके, तो उसके जो प्रॉपर्टीज़ में क्या आता है, रिपीटेशन आता है आफ्टर अ सर्टन काइंड ऑफ इंटरवल. ओके, येस. नाउ व्हाट द थर्ड पॉइंट सेज, on the basis of the findings he stated that properties of elements are periodic function of their atomic masses. Okay, तो ये जो है वो मेंडेलीव का क्या है, पीरियोडिक लॉ, दैट इज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. ओके, so hence this is the 2 marks question short note. You have to write down these points also. Okay, don't just state this one line, this is a Mendeleev periodic law. No, you have to write these points also. If you state it like this, you will get 1 mark, but if you want 2 marks, if you want full marks, then you have to write these points also. Okay, understand everyone? Okay, now the second point, the second question is demerits of Mendeleev's periodic table. Okay, तो यहीं पे हमको क्या दिया है, मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल की डीमेरिट्स लिखने हैं. ठीक है, सो इट कंसिस्ट ऑफ 4 पॉइंट्स, सो 4 डीमेरिट्स वी हैव टू राइट ओवर हियर. ओके, लेट्स टेक द फर्स्ट इज, फर्स्ट क्या है, आई होप ऑल ऑफ यू आर विथ योर टेक्स्ट बुक. प्लीज़ टेक आउट योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 20 where you can see the demerits of Mendeleev's periodic table. ओके, तो फर्स्ट क्या दिया है, मैंने यहाँ पे सिर्फ पॉइंट्स लिखा है, बट यू हैव टू राइट इट डाउन. जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है फुल सेंटेंस में वैसे ही आपको लिखना है. ओके, हियर आई हैव टेकन द पॉइंट्स.
Okay. Yes. So first is the whole number atomic mass of elements cobalt and nickel is same. तो ये दोनों का जो नंबर एटॉमिक मास है वो सेम है. तो इसके लिए क्या हुआ, देयर वॉज एन एम्बिगेटी, मतलब देयर वॉज सर्टन काइंड ऑफ इन सिक्वेंसनेस. और हम बोलते हैं ना कि कुछ मिलता जुलता नहीं है, लाइक दैट. ओके. सो देयर वॉज एन एम्बिगेटी. you can retain the one kind of word that is yes, confusion. ओके. आप ऐसे बोल सकते हैं कन्फ्यूजन था रिगार्डिंग टू द सीक्वेंस इन द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल. ओके. किसका सीक्वेंस, कोबाल्ट एंड निकेल का. ओके. तो ये जो है वो है फर्स्ट डीमेरिट्स. ठीक है. दैन द सेकेंड इज isotope were discovered long time after Mendeleev put forth periodic table. Okay, so as the isotope have the same chemical properties but different what, it has different atomic masses. So Mendeleev के सामने एक challenge आ गया to where to place this kind of isotopes in the Mendeleev periodic table. तो ये भी उसका एक क्या था, demerits. Now the third point is the when the elements are arranged in increasing order of their atomic mass, then what happen, atomic masses में राइज दिखाई दिया. राइज मतलब क्या, इंक्रीजनेस. ओके. एक एक एटॉमिक मास अगर बढ़ता जाएगा तो उसमें क्या आएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर आएगा. ओके. यस. तो ये जो इंक्रीजनेस था, द राइज इन द एटॉमिक मास डज नॉट अपियर टू बी यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म मतलब वो सेम नहीं था, उसमें कुछ काइंड ऑफ कन्फ्यूजन था. ठीक है. सो ये भी एक क्या था, डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल. एंड द फोर्थ पॉइंट इज पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन. ओके. तो हाइड्रोजन शोज सिमिलैरिटी विथ हैलोजन्स. ओके. ग्रुप 7 हैलोजन्स जो है, येस, हैलोजन्स बिलोंग्स टू ग्रुप 17. ओके. येस. तो हाइड्रोजन शोज सिमिलैरिटी विथ द हैलोजन्स. ओके. तो क्या था, हाइड्रोजन के बीच में एंड हैलोजन के बीच में सिमिलैरिटी था. तो इसमें क्या हुआ, हाइड्रोजन को कहाँ पर प्लेस करें और हैलोजन को कहाँ पर प्लेस करें, इसके बीच में थोड़ा कन्फ्यूजन था. किसको, मेंडलीव को. सो दैट इज़ ऑल्सो वन काइंड ऑफ डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल. ओके. So these things you have to write down if it asks for 2 marks, demerits of Mendeleev periodic table. Okay, done with this. अगर आपको ध्यान में रखना है तो आप ये पॉइंट्स ध्यान में रख सकते हैं, बट एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम, इन द एग्ज़ाम यू हैव टू राइट फुल सेंटेंस. ओके. येस. नाउ द थर्ड इज position of isotopes in the Mendeleev and modern periodic table. Either it will ask for 2 marks or it will ask for 3 marks. Okay. So the answer is isotopes were discovered after a long time. Mendeleev developed the periodic table. Okay. All the isotope of same element having different atomic mass but same atomic number. They also have the same chemical properties. ठीक है. तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में क्या हुआ, इन द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस सच दैट chemically similar elements are placed together in a group. So it was difficult to place them in Mendelev's periodic table. Okay. And in modern periodic table क्या हुआ, elements are arranged in increasing order of their atomic numbers. Okay. यहाँ पे atomic number आया है. Hence all the isotopes of elements occupy the same position in the modern periodic table. तो इसमें modern periodic table में उसका position same है, बट यहाँ पे कुछ डिफ़िकल्टी है टू प्लेस देम इन अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. ओके. इसलिए उनको क्या किया, उनको एक ही ग्रुप में टुगेदर प्लेस किया. किसको, आइसोटोप को. ठीक है. येस. नाउ गिव साइंटिफिक रीजंस. 2 marks क्वेश्चंस. एलिमेंट्स बिलोंग टू द सेम ग्रुप हैव सेम वैलेंसी. सो यू ऑल नो दैट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ आउटरमोस्ट शेल इज सेम फॉर ऑल द इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग्स टू द सेम ग्रुप. ओके. जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखते हैं तो सेम ग्रुप का जो है वो आउटरमोस्ट शेल में सेम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ओके. आई होप यू ऑल नो दैट, राइट.
Yes, so the number of valence electron for all the electrons in the group is same. तो number of valence electron भी same होते हैं. So what happens? The valency of an element is determined by valence electron. Yes, hence the elements belongs to the same group have same valency. Group मतलब क्या होता है? Vertical columns. Horizontal rows को क्या बोलते हैं? Periods. Okay, very very important. What is group? Vertical columns, we have 18 groups. And what is called as periods? Horizontal rows, how many periods we have in the modern periodic table? That is 7 periods. ठीक है? Okay, so here you have to write these 4 points and hence जो है वो लिखना ज़रूरी है in the last sentence. Now the second is atomic radius goes on increasing down a group. तो ग्रुप में जो है एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है. As we move from top to bottom in a group, number of shells increases. Okay, you all know that. Yes? हाँ. The outermost electrons go further and further from the nucleus, extending the radius and ultimately increasing the size of atom, even though the nuclear charge gets increases. Hence, the atomic radius goes on increases down a group. Okay, तो यहाँ पे क्या होता है? साइज़ जो है एटम की वो क्या होती है? इंक्रीज़ हो जाती है. एंड न्यूक्लियर चार्ज ऑल्सो इंक्रीज़ होता है. एंड दैट्स वाई हियर यू कैन सी एटॉमिक रेडियस ऑल्सो गोज ऑन इंक्रीजिंग डाउन अ ग्रुप. ओके, फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप. येस. नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज एटॉमिक रेडियस गोज ऑन डिक्रीजिंग वाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड. तो पीरियड में एटॉमिक रेडियस क्या होता है? डिक्रीज होता है. ग्रुप में क्या होता है? इट गोज ऑन इंक्रीजेस. ठीक है? ओके, सो हियर while going from left to right in a period, what happened? Atomic number gets increases. Yes. So the positive charge on the nucleus, it also increases. Yes. And at the same time, what happened? Electrons gets added in the same outermost shell. ओके, सेम outermost shell में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऐड होते हैं. सो दिस इंक्रीजेस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. ये क्या करता है? न्यूक्लियर चार्ज को इंक्रीज करता है. एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड क्लोजर टू द न्यूक्लियस एंड विच डिक्रीजेज द साइज ऑफ एटम. सो व्हाट हैपन्स? दस द एटॉमिक रेडियस गोज ऑन डिक्रीजिंग while going from left to right in a period. Okay, तो पीरियड में एटॉमिक रेडियस क्या होता है? डिक्रीज होता है. एंड ग्रुप में क्या होता है? वो इंक्रीज होता है. ओके, येस. नाउ मेटालिक कैरेक्टर्स गोज ऑन डिक्रीजिंग while going from left to right in a period. मेटालिक कैरेक्टर भी है वो भी डिक्रीज होते हैं while going from left to right in a period. पीरियड है कि ग्रुप है वो पहले देखने का. Question you have to read properly and after that you have to write the answer. Okay, don't just एक ही नज़र से कुछ क्वेश्चन देखा और कुछ आंसर कुछ और है, क्वेश्चन कुछ और है, ऐसे नहीं करने का है. Okay, yes, you all know that, right? So here what is the answer? While going from left to right in a period, electrons are added to the same outermost shell. At the same time, protons also gets added to the nucleus, which increases the nuclear charge. Hence, these electrons experience greater pull from the nucleus due to increased effective nuclear charge. And as a result, what happened? It becomes difficult to remove a valence electron from the atom. And that's why, hence, the metallic character goes on decreasing while going from left to right in a period. ओके, जैसे आप रीड करोगे ये आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या होता है उसमें. ओके, येस. नाउ आंसर द फॉलोइंग 3 marks क्वेश्चन. हियर यू कैन सी एक्सप्लेन द ग्रेडेशन इन रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन फैमिली. व्हाट आर द सिमिलैरिटीज इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इन हैलोजन फैमिली एंड व्हाई आर द इनर्ट गैसेस प्लेस्ड इन जीरो ग्रुप. ओके, तो 1 by 1 देखते हैं. While going from top to bottom within a group 17, okay, a gradation is observed in their physical state. Group 17 में कौन होते हैं? Halogens, that is fluorine, chlorine, bromine and iodine. Okay, so fluorine, chlorine,
fluorine and chlorine are gases, bromine is a water and that is liquid, and iodine is what? It is solid. ओके तो इसके फिजिकल स्टेट में ये हमें क्या दिखाई देता है? ग्रेडेशन, डिफरेंस. ऑल द मेंबर्स ऑफ हैलोजन फैमिली हैव द जनरल फॉर्मूला दैट इज X2. X मतलब क्या? अगर हम X की जगह पे F को प्लेस करेंगे तो F2 हो गया, Cl को प्लेस करेंगे तो क्या हो गया? Cl2 हो गया. यह Br को प्लेस करेंगे देन वी विल गेट Br2, और यहाँ पे X की जगह पे I को प्लेस किया तो क्या हो गया? I2. ओके सो दे हैव द सेम फॉर्मूला and all of them have 7 valence electron and their valency is 1. Okay, and the third is, why are the inert gases placed in zero group? Inert gases contains 8 electron in their outermost shell except helium, which consists of 2 electrons. Their valency is 0. तो that's why inert gases are placed in zero group. उसकी वैलेंसी ज़ीरो रहती है, इसके लिए वो ज़ीरो ग्रुप में प्लेस्ड करते हैं. ज़ीरो ग्रुप मतलब कौन सा ग्रुप? इनर्ट गैसेस का ग्रुप कौन सा होता है? ग्रुप 18. ओके, हीलियम, नियॉन, अर्गॉन, दिस आर कॉल्ड एज व्हाट? दिस आर कॉल्ड एज व्हाट? गैसेस, नोबल गैसेस. ठीक है. ओके, नाउ हियर राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स फ्रॉम द गिवन एटॉमिक नंबर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ये आपको 3 मार्क्स के लिए भी क्वेश्चंस आ सकता है. ओके सो लिथियम, सिलिकॉन, हीलियम, यहाँ पे Na सोडियम दिया है और फॉस्फोरस. ओके तो हमें क्या करना है? उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है, लिखना है. 3 लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 3. तो क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल गेट ओवर हियर? दैट इज़ 2 and 1. ओके, I hope all of you are aware about this and you have practiced this so many times. Now this is just a time for the quick revision. Okay, फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी कितनी होती है? 2 इलेक्ट्रॉन्स. सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स. आफ्टर दैट ऑल्सो 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड आफ्टर दैट रिमेनिंग 1. सो हाउ मेनी शेल्स वी आर हैविंग? 4 शेल्स. ओके, K shell, L shell, M shell and N shell. Okay, you all know that. Now silicon का atomic number है 14. So here we will get 2, 8, 4. Helium is 2. Then we will get 2 over here. Na 11, 2, 8, 1. Phosphorus 15, 2, 8, 5. So which of these elements belong to period 3? Period 3 में कौन से elements हैं? That is silicon है, फिर Na, that is sodium है, and phosphorus. These are belongs to period 3. As a 3 shell, it consists of how many shell? 3 shell. Okay, 3 shell यहाँ पे वो occupied करते हैं. Okay, yes. Now यहाँ पे sodium, phosphorus, chlorine, silicon, magnesium. Which of these has the largest atom? And we have to write their electronic configuration also. Okay, तो ये जो सब हैं वो कौन से ग्रुप, कौन से पीरियड से बिलोंग करते हैं? एवरीवन, yes, they are belongs to the period 3. Yes, so here we will get their electronic configuration like this. Okay, नाइट्रोजन भी पीरियड 3 में है, फिर phosphorus is also there, chlorine is also there, silicon is also there and magnesium is also there. Yes, so this all elements belongs to period 3. Okay, the elements which has the largest atom is sodium, because sodium क्या है? वो सबसे पहले आता है वो पीरियड में एटॉम. So that's why, because atomic size decreases moving across a period from left to right. तो ये एटॉमिक साइज़ जो है वो डिक्रीज़ होता है. तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी साइज़? किसकी होगी? जो पहले वाला है उसका. आर यू अंडरस्टैंडिंग? येस. सो पहले वाला कौन है? सोडियम. ओके, नाउ दिस क्वेश्चन यू ऑलरेडी हैव इन योर प्रीलियम्स का क्वेश्चन पेपर. और यहाँ पे आपको क्या दिया है? 2 एलिमेंट्स आर देयर एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई A एंड B एलिमेंट्स. सबसे पहले क्या देखना है? उसका क्या करना है? आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है. फ्रॉम यू हैव टू क्या करना है आपको ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो काउंट करने हैं. ओके, तो इट कंसिस्ट ऑफ 3 शेल्स. फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, सो 2. हियर यू कैन सी 1, 2, 3,
4 5 6 7 8 2 8 और ये कौन है 2. ओके, आउटर मोस्ट शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है. तो 2 8 2, 8 + 2 10 12. तो एटॉमिक नंबर किसका 12 है? मैग्नीशियम का. यस. सो ए इज़ मैग्नीशियम एंड बी इज़ व्हाट? किसका एटॉमिक नंबर 4 है? बेरिलियम. ओके, तो बेरिलियम इज़ द सेकेंड एलिमेंट. Do these elements belongs to the same group? Okay, they are belongs to the same group. कौन है मैग्नीशियम एंड बेरिलियम? yes, they are belongs to the group 2. So they are belongs to the same group as they have same number of valence electron. Which of this element is more electropositive? Element A, that is magnesium, is more electropositive than B. This is because what? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी वो क्या होती है? इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप विथ इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज. ओके, सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑल्सो कम. सो रिमेंबर इट. पहले आपको सब काउंट करना है, फिर याद करना है कि 12 नंबर किसका था. ओके, राइट डाउन इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ग्रुप कौन सा है वो रिमेंबर करो. ओके, यस. सो दिस इज़ अ 3 मार्क क्वेश्चन. एंड question number 4, that is answer in brief. So this question is explain the structure of modern periodic table. Here we have to just explain the structure. Okay, so either it will come for 2 marks or it will come for 3 marks or it will come for 5 marks. Mostly if it comes then it will come for 3 or 5 marks because उसका आंसर भी बहुत बड़ा है. ठीक है, तो here we can see its answer. आपको जस्ट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एक्सप्लेन करना है. सो द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ 7 हॉरिजॉन्टल रोज. इट कंसिस्ट ऑफ 7 हॉरिजॉन्टल रोज विच कॉल्ड पीरियड. ओके, 1 to 7. सिमिलरली 18 वर्टिकल कॉलम्स इन द टेबल. ओके, 1 to 18 एंड दिस आर कॉल्ड एज व्हाट? वर्टिकल कॉलम्स को क्या बोलते हैं? इट इज़ कॉल्ड एज ग्रुप. ओके, एंड हॉरिजॉन्टल रो पीरियड्स. Apart from these 7 rows, 2 rows are separately shown at the bottom of the periodic table and they are called as what? Lanthanide and actinide series. The entire periodic table is divided into how many blocks? 4 blocks. S block, P block, D block and F block. So S block consists of group 1 and 2. The groups 13 and 18 13 to 18 constitute P block. Okay, group 3 to 12 is D block, while the lanthanide and actinide series they are constitute F block. Okay, so D block elements are called as which elements? Transition elements. zigzag line कहाँ पे होती है? P block element में. Okay, zigzag line होती है and the metalloids lie along the border of this zigzag line. All the metals lie on the left side of the zigzag line while all the non-metal they are lie on the right side. ओके, तो बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का इट शोज लाइक दिस. इतने सारे पॉइंट्स जो है वो उसमें इम्पॉर्टेंट है ही, इतना यू हैव टू राइट डाउन. ओके, एंड आई होप ऑल ऑफ यू हैव सीन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. ये ऐसा है बट आपको ये ड्रॉ करने को नहीं आएगा, इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस ज़रूर पूछेंगे. ओके, सो याद करना इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. ठीक है, सो गो थ्रू द वीडियो स्टूडेंट्स, mark the points, mark the things whatever is there and practice doing the questions, practice doing questions of electronic configurations and modern periodic table. Okay, thank you.